सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो लीफ मोल्ड्स हैं उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो लीफ मोल्ड है उसमें आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, उसमें नाइट्रोजन प्रॉपर मिलेगी, उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ड्रेनेज काफी अच्छी होती है। मीडिया शुड नॉट टू स्टिकी और टू सैंडी। ऐसा भी ना हो कि आपकी जो सॉइल है बहुत ज्यादा क्ले हो, तो उसमें पोरस साइज कम हो जाएगा। पोरस साइज कम हो जाएगा तो वाटर को आप देखोगे कि वो रिटेन तो रख रहा है पर कीचड़ बन रहा है, और रूट्स को प्रॉपर एयरेशन नहीं मिलेगी। अगर ज्यादा सैंडी होगी तो वाटर बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगा, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर वाटर पौधे को नहीं मिल पाएगा। सो नेक्स्ट है कंटेनर कौन से यूज करना है। तो काफी तरह के कंटेनर्स हैं इसमें आते हैं, तो काफी शेप्स हैं। ज्यादातर जो शेप्स हैं हम सिलेक्ट करते हैं इसकी शेप के हिसाब से, इसके प्लांट की हाइट के हिसाब से, प्लांट को कैसी शेप देनी है उस हिसाब से। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कंटेनर्स मैं अपने यहाँ यूज कर रहा हूँ। द सिलेक्शन ऑफ appropriate container for bonsai is an utmost important element in this art. Bonsai pots are usually earthenware with or without a colorful glazing. However, unglazed containers are preferred to highlight the bonsai plant. सो एक चीज क्लियर है कि अगर हम अर्दन पॉट्स यूज करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं तो पानी बड़ी जल्दी इवेपोरेट भी होता है, और ये पॉट्स कूल भी रहते हैं। गर्मियों में कूल रहेंगे, सर्दियों में थोड़े ठंडे रहेंगे, सॉरी सर्दियों में थोड़े गर्म रहेंगे। तो अगर मैं इसकी जगह अदर मटेरियल यूज करूं, जैसे प्लास्टिक यूज कर रहा हूं, तो वो पॉट्स बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे। अगर मैं इसमें बात करूं, कुछ कंटेनर्स और हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे चाइनीज क्ले कंटेनर्स हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की शेप्स हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे राउंड है, ओवल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ऑक्टागोनल है, लोब्ड है। इनमें से कोई भी कंटेनर हम यूज कर सकते हैं, बट फोकस रहेगा कि बॉन्साई का शेप कैसी हो। कंटेनर शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड अपॉन द कलर एंड प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट इन ऑर्डर टू हार्मोनाइज। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि जो मेरा प्लांट है उसके लीव्स किस कलर के हैं, उसकी स्टेम किस कलर की है। उस हिसाब से मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरा पॉट जो है उसका कलर कैसा हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्साई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेरा पॉट बॉन्साई से ज्यादा खूबसूरत होगा तो क्या होगा कि मेरा फोकस ज्यादातर पॉट पे रहेगा, बॉन्साई के ऊपर नहीं रहेगा। सो जब भी हमने पॉट सेलेक्ट करने हैं, कोशिश करनी है कि हमें प्लेन जो है पॉट्स मिले और ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो, ताकि आपका फोकस बॉन्साई रहे। सो इसमें आप कुछ बॉन्साई देख रहे हो। रिगार्डिंग द पॉट साइज, थंब रूल इज द पॉट डेप्थ शुड बी इक्वल टू द ट्रंक डायमीटर अबव सॉइल लेवल। सो इसकी जो ऊंचाई है थोड़ी ट्रंक के हिसाब से होती है। Oval and rectangular pots are usually two-thirds of the tree height, and round or square pots are one-third of the height of the tree. Then color of the pot should be also compatible or complement to the plant, either with bark, leaf, flower, or fruit color. Next, for making bonsai plants, can be collected from the wild rough care through care uprooting, and it is considered as the best way to start the or otherwise 2-3 years old seedling raised in the nursery can also be used. इसमें थोड़ा सा फोकस करूंगा। क्या है कि मैंने जब प्लांट सिलेक्शन करनी है तो एक चीज मैं मान के चलूं कि बॉन्साई मेरा एक दिन में नहीं बनेगा, बॉन्साई मेरा एक महीने में नहीं बनेगा, बॉन्साई मेरा एक साल में भी नहीं बनेगा। अगर मैं पहले दिन से शुरू करता हूं तो बॉन्साई को बहुत टाइम लगता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास 35 years ओल्ड बॉन्साई पड़े हैं, तो मेरे फादर ने बनाने शुरू किए थे, आज मैं उसको देख रहा हूं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास क्विक बॉन्साई बने, तो उसके लिए मेरे को क्या सिलेक्ट करना होगा, मैं नर्सरी जाऊंगा, नर्सरी में से कुछ ऐसे प्लांट सिलेक्ट करूंगा जिसकी थोड़ी सी शेप बॉन्साई लाइक हो। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके आसपास घर होंगे, तो जो पुराने घर हैं उनकी दीवारों में पौधे उग जाते हैं, तो आप उसको काटते रहते हो तो वो एक नेचुरल बॉन्साई शेप में भी आ जाते हैं। तो उसको बड़ी केयरफुली हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ प्लांट दिखाऊंगा,
जो कुछ एक आधा साल पहले मैंने कलेक्ट किए हैं, वाइल्ड कलेक्ट किए हैं, जिसको मैं अभी बॉन्साई शेप में लेके आ रहा हूँ। ऐसे ही मैं बात करूं तो कुछ प्लांट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो, अगर मेरे को, आई डोंट नो कि कुछ स्टूडेंट्स हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं या नहीं इस ट्रेनिंग में, तो आप देखोगे कि आपके जो रोड साइड है या जो आपके पहाड़ों पे प्लांट्स हैं, तो क्या होते हैं, कई बार गाय बकरियां चर जाती हैं, या फिर क्या होता है कि ये जो प्लांट्स हैं, इसमें क्या होता है कि लोग काटते रहते हैं इसको। तो काटने के बाद क्या होगा कि ये एक नेचुरल लुक में आना शुरू हो जाते हैं, तो हम उन प्लांट्स को कलेक्ट करके भी एक शेप में लेके आ सकते हैं। नाउ, initially, these are planted in ground in order to develop healthier root and shoot system, then repotted to shallow trays. In subtropical climate, March, April, and rainy season is the best time for planting and repotting of bonsai. तेजस गाल सुनो। सो बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें तो बेस्ट टाइम जो है हमारे लिए वो मार्च अप्रैल है, क्योंकि इसमें हार्श क्लाइमेट जो है वो निकल चुका होगा। सेकंड अगर चीज हम देखें तो ये वो टाइम होगा जब न्यू ग्रोथ का हमारे स्प्रिंग सीजन होगा। सेकंड हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो रेनी सीजन है वो बेस्ट टाइम है ट्रांसप्लांट का, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होगी। तो इसमें एक चीज हम और भी देखते हैं कि जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं ज्यादातर उसको रीपॉटिंग या फिर उसको पॉटिंग जो करते हैं हम रेनी सीजन में करते हैं, और ज्यादातर डेसिडुअस प्लांट्स वो जो पत्ते झाड़ देते हैं उनको हम ट्रांसप्लांटिंग या प्लांटिंग जो है वो ज्यादातर उस टाइम में करते हैं जब उसके लीव्स झड़े हों। तो वो फरवरी और जनवरी, फरवरी मार्च का महीना जो है वो उसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है। तो इन प्लांट्स को हम ऐसे लगाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बॉन्साई दिखा रहा था, तेजस। तो आप मेरे हाथ में एक प्लांट देख रहे थे, तो ये प्लांट जो आप देख रहे हो फोटोग्राफ में, और जो अभी बॉन्साई में आपको दिखाने लगा हूं, ये इनिशियल टाइम का है जब ये बॉन्साई बनना शुरू हुआ था, और आज इसकी शेप ये है। आप स्टैचू भी वही देख रहे हो और प्लांट भी वही देख रहे हो, तो इसमें और उसमें कितना ज्यादा फर्क है। सो बॉन्साई कभी भी क्विक नहीं बनता, बॉन्साई टाइम लेता है बनने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो पेशेंस चाहिए होंगे। अगर आगे बात करूं तो ये जो बॉन्साई है, इनमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि जब ये लुक दे गए तो इसकी मेंटेनेंस आपकी कम रह जाएगी, सिर्फ ट्रेनिंग प्रूनिंग पे रहेगी। नहीं तो इनिशियल स्टेज में कौन सी स्टेम आपने रखनी है, कौन सी रिमूव करनी है, इस पे फोकस रहेगा। तो सबसे पहले आपका ब्रेन जो है वो आर्टिस्टिक होना चाहिए, सो दैट आपके दिमाग में हो कि अगर ये स्टेम काटूंगा तो कौन सी स्टेम्स और आएंगी। नाउ वाटरिंग, मैं पहले बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटरिंग। Unlike a house plant, bonsai trees use a free draining type of soil because their rooting cannot tolerate wet conditions. अगर ज्यादा पानी रहेगा तो क्या होगा, इसकी रूट्स जो है वो रॉट करनी शुरू हो जाएंगी। फैक्टर्स सच एज ट्री लोकेशन, टेम्परेचर, लाइटिंग कंडीशन, frequent quality of soil, frequency of watering, the changing season will determine the frequency of watering. एग्जाम्पल दूं, अगर मैंने सॉइल यूज किया उसमें थोड़ा पोरस ज्यादा है, मतलब मैंने सैंड ज्यादा यूज किया, तो मेरे को फ्रीक्वेंटली वाटरिंग करेंगी। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइटिंग कंडीशन की बात करूं, जैसे हमारा विंटर सीजन है तो उसमें लाइट ज्यादा नहीं होती, बट समर सीजन में लाइट बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से हम देखते हैं टेम्परेचर जो है गर्मियों में ज्यादा है और सर्दियों में कम है। तो अभी मैं अपने प्लांट्स को हफ्ते बाद भी वाटरिंग कर लूं कोई दिक्कत नहीं है, बट गर्मियों में ये होता है इवन दिन में 2 बार भी वाटरिंग करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका टेम्परेचर कितना है, लाइट कितनी इंटेंसिटी की है, प्लांट कौन सा है। कुछ प्लांट्स हैं जिनको पानी ज्यादा चाहिए, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको जो पानी है वो प्रॉपर चाहिए। तो इन चीजों के ऊपर ये सारा डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बात करें, वाटरिंग रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द फॉलिएज, टेस्टिंग द सॉइल विद योर इंडेक्स फिंगर जस्ट बिलो द सरफेस और जस्ट बाय द वेट ऑफ द पॉट। देखो ये जो
मैं बात करूं, किताबों की बातें होती हैं, इसमें थोड़ा सा मैं कम बिलीव करता हूँ। जैसे इसमें बात की है हमने कि वेट ऑफ द पॉट, हम कभी भी पॉट का वेट करके पानी नहीं देते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर इसमें क्या करते हैं, हम एक फिंगर लेंगे, मिट्टी को हाथ लगाएंगे, तो अगर तो हमारा हाथ प्रॉपर अंदर जा रहा है तो इसका मतलब अभी मॉइस्ट है और हाथ हल्का हल्का गीला होगा। और दूसरा, अगर हम फिंगर को लगा रहे हैं और मिट्टी जो है हार्ड है, तो इसका मतलब है इसको वाटरिंग की जरूरत है और वो आपको ड्राई फील होगी। सो फिंगर टेस्ट सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसकी वजह से हम वाटरिंग कर सकते हैं। बाकी जो लीव्स हैं वो भी इंडिकेट करते हैं, अगर लीव्स थोड़े से मुरझा रहे हैं, विल्टिंग शो कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको वाटरिंग चाहिए। नाउ, overall, if you do not feel much moisture in the top half inch of the soil, then it's time to water. मैंने कहा हाथ सबसे बेस्ट है, वहां से आपको पता लग जाएगा कि पानी पौधे को देने की जरूरत है या नहीं है। In summer, trees should be watered in the early morning or late afternoon to avoid the midday heat. This will prevent the leaves of the finer bonsai from burning. देखो ये अच्छी बात है कि इंसान और प्लांट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मैं इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं देखता। मैं इन प्लांट्स को भी अपने बच्चों की तरह पालता हूँ जैसे मेरी बेटी है। इसको मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि अगर हम गर्मी से एकदम आके ठंडे पानी पी लें तो हम देखते हैं हमारा गला खराब हो जाता है या हम बीमार हो जाते हैं। सेम चीज पौधों के साथ है, जब बहुत ज्यादा हीट होगी एकदम हम पानी दे दें पौधों को तो वो भी खराब हो जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि इन प्लांट्स को या तो अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इवनिंग आवर्स में हम वाटरिंग करें, थोड़ा सा लेवल रहे। इन समर ट्रीज शुड बी वाटर्ड इन द अर्ली मॉर्निंग, जैसे हमने बात की। इन विंटर वाटर अर्ली और परमिट एनी एक्सेस टू ड्रेन बिफोर द नाइट फ्रॉस्ट। सो पानी कभी भी उसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्रॉस्ट पड़ेगी तो वो रूट्स का टेम्परेचर डाउन कर देगी, उसकी वजह से रूट्स डैमेज होगी। तो पानी को ज्यादा हमने खड़ा नहीं रहने देना, ड्रेन कर देना। तो सर्दियों में थोड़ा शाम को हम वाटरिंग अवॉइड करते हैं, दिन के टाइम पर सुबह वाटरिंग करें वो सही है। नाउ न्यूट्रिशन, bonsai plants are grown in limited amount of soil. Adequate supply of nutrient for sustaining its growth is very important. When your bonsai starts to give new growth, it is time to supplement the bonsai plant with nutrition. Alternatively, powdered or liquid mustard cake can also be applied in bonsai plants during spring and rainy season once a month, followed by watering. तो ये केक जो होते हैं इनमें भी काफी न्यूट्रिशन होता है। तो वैसे मैं जो अपनी बात करूं तो मैं कोशिश करता हूं कि साल बाद जो सॉइल है प्लांट्स की चेंज कर देता हूं। बाकी आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लीफ मोल्ड है वो ऐड करते रहें, उससे भी न्यूट्रिशन ऐड होता है। और लिक्विड जो ये केक्स हैं इनको पानी में घोल के भी आप यूज कर सकते हो। अब रीपॉटिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको जो प्लांट दिखा रहा हूँ उसमें रूट सिस्टम प्रॉपर डिवेल्प हो चुका है, भर चुका है। अगर मैं इसको अभी यूज नहीं करूंगा, इसको रीपॉट नहीं करूंगा, तो एक्सेस रूटिंग हो चुकी है, ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये प्लांट खराब होना शुरू हो गया तो फिर ये ऊपर से सूखना शुरू हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीपॉटिंग करेंगे। इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको और दे दूं कि जो प्लांट्स हैं वो हम क्या करते हैं, पहले पॉट्स में ग्रो करते हैं। जैसे ये अभी बॉन्साई एक और है जो मेरी बेटी स्टार्ट करेगी, इसने एक बनाया भी हुआ है और ये सेकंड अभी शुरू कर रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसने पहले ये प्लांट्स इस पॉट्स में बड़े में ग्रो किए, जबकि ये प्लांट बहुत छोटा है। मैं आपको मिनी बॉन्साई भी दिखाऊंगा जो बहुत छोटे साइज के होंगे। तो मिनी बॉन्साई का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा छोटा स्ट्रक्चर। तो इसको हम मेंटेन करते हैं कैसे कि पहले तो कंटेनर और इसकी प्रूनिंग, क्योंकि मैं बात कर रहा था प्रूनिंग की, तो ये रूट्स को हमें प्रून करना पड़ेगा। तो इनकी प्रूनिंग जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हमें लगता है कि ये पौधा हमने थोड़ा बड़ा करना है तो इसका पॉट साइज भी हम बड़ा कर देंगे। However, in repotting of bonsai plants,
miniaturization of a bonsai tree is maintained by keeping the roots confined to the small container, which is achieved by root pruning. जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर मैंने किसी छोटे ट्रे में प्लांट्स को रखना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब वो पूरी भर जाए इसको ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कभी भी मैंने सीधा में नहीं रखना, तो इसको ट्रिम करके अच्छी मिट्टी डाल के उसके बाद मैं इसको शेड में रख दूंगा। क्योंकि अगर मैं धूप में रखूंगा तो इतना न्यूट्रिशन पौधा और इतना वाटर अपटेक नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे विल्टिंग होकर ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसको मैं शेड में रखूंगा सो दैट अभी ये हार्श कंडीशन है, पौधा जब नए पत्ते निकालने शुरू कर देगा उसके बाद फिर इसको मैं धूप में ले जाऊंगा। सो रिपोर्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भी है, कुछ कहते हैं कि हमें 2 साल के बाद रिपोर्टिंग करनी चाहिए, कोई कहता है 3 साल के बाद रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जबकि प्लांट्स का कोई भी रिपोर्टिंग का टाइम नहीं होता। मैं बोल दूं 6 महीने बाद भी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है रूट सिस्टम के ऊपर कि रूट सिस्टम कितनी जल्दी डेवलप हो रहा है। रिपोर्टिंग विल बी नेसेसरी एवरी 3 to 5 years। अगर आपने 2-3 साल नहीं किया है तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट सिस्टम प्रॉपर डेवलप हो चुका होगा। बट अगर बड़े मॉन्साई हैं तो उसको आपको हर साल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इफ द रूट्स फ्रॉम ए सर्कुलर बॉल अराउंड द perimeter of the pot, it is time to trim the roots and repot, water well, and keep the plant under shade for week or 2। मैंने वही बात आपको क्लियर की पहले कि जब रूट्स बाहर आनी शुरू हो जाएं, हम क्या करते हैं, कोई भी पॉट में प्लांट लगाना होता है तो उसमें पहले एक होल करते हैं। चलो इसका प्रोसेस मैं अपनी बेटी से सुनाता हूँ, तेजस। कोई भी प्लांट हमने अगर लगाया तो उसको कैसे लगाते हैं, बोलिए। सबसे पहले हमको एक पॉट लेना है, उसके अंदर एक खोल कर लेना है, उसके ऊपर हमको एक पत्थर रखना है, फिर मिट्टी भर देनी है, उसके बाद प्लांट लगाना है। हाँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमने मिट्टी के ऊपर जो कंटेनर में होल है उसके ऊपर एक पत्थर रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर ये पत्थर नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका वाटर जो एक्स्ट्रा है वो ड्रेन नहीं होगा। अगर ये ड्रेन नहीं हो रहा तो समझ लो कि वाटर लॉगिंग होगी और आपका प्लांट खराब होगा। और इस होल से ही आप देखोगे कि रूट्स बाहर बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। जब इसमें से रूट्स बाहर आनी शुरू हो जाएं तो आप समझ के चलो कि पॉट पूरा रूट से भर चुका है और अब इसकी रीपॉटिंग आपको करनी पड़ेगी। अभी हमने बोला कि एक हफ्ता या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हम उसको शेड में रखेंगे, पर मैं कोशिश करता हूं कि जब तक उसमें न्यू लीफ नहीं आ रहे उसको शेड में रखते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हार्श लाइट को नहीं सहन कर सकेगा, तो इसलिए हम उसको थोड़ी देर शेड में रखते हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन बॉन्साई, क्योंकि बॉन्साई सारे का सारा इसी पे टिका हुआ है। अगर ट्रेनिंग और प्रूनिंग करनी हमें आ गई तो हमारे बॉन्साई प्रॉपर मेंटेन रहेंगे। बॉन्साई प्लांट्स आर ट्रेन्ड टू ग्रो into different styles and shapes, which is achieved with the help of regular pruning and wiring technique। Pruning भी जरूरी है और wiring भी जरूरी है। Pruning in bonsai is achieved in 2 ways। One is called maintenance pruning, which simply involves pruning of those branches which have outgrowth the intended canopy shape। Its basic objective is to maintain and refine the existing shape of bonsai। तो 2 तरह की प्रूनिंग करते हैं, एक तो वो कि जो इंटरमिंकल्ड ब्रांचेस हैं जो हमें नहीं चाहिए, या फिर वो स्टेम्स जो सूख रही हैं उसको रिमूव कर, और एक प्रूनिंग वो है जो हम शेप देने के लिए कर रहे हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस प्रूनिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन, यूजली फ्रॉम मार्च टू सितंबर। देखो फरवरी के बाद जब अच्छा सीजन आ जाएगा, लीव्स आनी शुरू हो जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है, तो ये काफी अच्छा ग्रो करते हैं। और अगर बात करूं तो गर्मियों का सीजन हर प्लांट के लिए बेस्ट होता है। अगर हम पानी प्रॉपर देते रहे तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, तो उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा जो है प्रूनिंग करनी पड़ेगी। Other type of pruning is structural pruning, which is mainly aimed at giving the bonsai plant a proper shape by removing the branches or shoots more
रिगरसली। तो बेसिकली इसकी जो कटिंग है वो हमें करते रहनी पड़ेगी और इसको शेप देने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी शेप कैसे मेंटेन करनी है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इन चीजों को हम जो है इसमें ध्यान रख के करेंगे कि शेप कैसी है उस हिसाब से कटिंग होगी। अगर शेप मेरी कुछ और है और मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ और कटिंग गलत होगी, तो समझ लो कि मेरी सारी मेहनत जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देख के मेरे को प्रूनिंग करनी पड़ेगी। Training and pruning in bonsai. It is preferably done before or after active growing season of plant, which could be either in early spring or in late autumn. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने गलत सीजन पे प्रूनिंग कर दी तो क्या होगा कि उसमें प्रॉपर लीव्स नहीं आएंगे और प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा। सो प्रूनिंग का टाइम प्रॉपर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो फरवरी जैसे ही खत्म हुई उसके टाइम मैं प्रूनिंग कर दूं तो बेस्ट टाइम है। अब का टाइम करूं अगर मैं अभी प्रूनिंग कर दूंगा तो प्लांट्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। सो प्रूनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउएवर टाइम ऑफ प्रूनिंग आल्सो वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब कुछ आपके डेसिडुअस हैं, कुछ आपके एवरग्रीन प्लांट है, तो इनकी प्रूनिंग का टाइम वेरी करेगा। टू प्रून इफेक्टिवली एंड करेक्टली प्लेस द प्लांट्स एट आई लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं ऊपर खड़े होके प्लांट्स को काटना शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो उसको सबसे पहले आई लेवल पे आए, क्योंकि जब भी मैं आई लेवल पे रखूंगा तो मेरे को वो प्रॉपर दिखेगा कौन सी स्टेम काटनी है कौन सी नहीं। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो सिर्फ ऊपर वाली शेप दिख रही है, होल प्लांट मेरे को नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से जब भी प्रूनिंग करनी है आई लेवल पे रख के प्लांट्स को हमने प्रूनिंग करनी है। All the dead and branches after the create the desired design by removing the selective। so जो डिजाइन हमने सेलेक्ट किया उस हिसाब से फिर हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। अब सारी स्टेम्स हमारे हिसाब से नहीं आएगी तो किसी को वायरिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं इस बॉन्साई की बात करूं, ये बहुत ज्यादा छोटा बॉन्साई है। अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो इसकी प्रूनिंग करूं तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आएगा जितनी देर तक मैं इसको आई लेवल पे नहीं रखता। तो ये मिनिएचर बॉन्साई है हमारा, बहुत ज्यादा छोटा है। तो आप ट्रे ही देख रहे हो तो ये मेरे हाथ से भी छोटी है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लेटर में। तो पहले हम बात कर रहे थे वायरिंग की। तो कौन सी स्टेम को कैसे लेके जाना है, कौन सा डिजाइन है, उस हिसाब से हमें वायरिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है। क्योंकि कई स्टेम्स हमारे मुताबिक ग्रो नहीं होंगी, वो नेचुरल ग्रो होंगी, सीधी होंगी, हमने उसको घुमाना होगा। तो उसको घुमाने के लिए हमें वायरिंग यूज करनी पड़ती है। तो वायरिंग सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स अ फ्यू मंथ्स और ब्रांचेस टू टेक द डिजायर्ड शेप और न्यू पोजीशन। जिस पोजीशन में हमने लेके जाना है, जिस शेप में हमने लेके जाना है, उसके लिए जो वायरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये नहीं है कि मैंने आज वायरिंग की हफ्ते बाद खोल दूंगा तो उस शेप में आ जाएगा, नहीं। उसको काफी महीने मेरे को उस वायरिंग को करके रखना पड़ेगा। Most tree species can be wired at any time of the year. However, deciduous trees are much easier to wire in late winter due to the absence of leaf. अब डेसिडियस ट्रीज है, जैसे मैं बात कर लूं एप्पल हो गया, जैसे मैं बात कर लूं मलबेरी होगी, जैसे मैं बात कर लूं आपका इवन बोगनविलिया भी कुछ हद तक है ना, सेमी डेसिडियस है ये। तो इनको हम जब वायर करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जब इसमें लीव्स ना हो, क्योंकि स्टेम को वायर करना उस टाइम इजी है जब इसमें लीव्स ना हो। तो बेसिकली दो तरह की वायर्स जो है वो उसको हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम वायर होती है, कॉपर वायर होती है। तो उसको हम यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन। इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कारण क्या है कि ये ज्यादातर क्लासिफिकेशन जो है ये साइज के मुताबिक है। इसके मुताबिक जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें हम बॉन्साई रखते हैं। तो हम आज सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं कि बॉन्साई कैसे होते हैं, कैसे उसको ट्रेन करना है। तो ये काफी हायर लेवल की बातें हैं कि उसकी साइज कैसा होगा, है ना। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं थोड़ा। तो लास्ट ये एक टेबल में दिखा देता हूँ कि ये डिफरेंट तरह के बॉन्साई होती हैं। मेमे बॉन्साई जिसकी हम बात कर रहे थे कि 2 to 6 इंच की होती है, तो बहुत ज्यादा छोटे प्लांट्स भी होते हैं ना जिनके हम बॉन्साई बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बॉन्साई बहुत बड़े प्लांट्स ही होंगे।
तो इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट जहाँ कंपटीशन होते हैं ज्यादातर इसके मुताबिक नहीं होते। तो मेरे को काफी बार जज करने का मौका मिला बॉन्साइज को। तो मैं देखता हूँ कि बॉन्साई की जब जजमेंट होती है तो काफी क्लासिफिकेशंस नहीं रखी जाती, तो वहां पे जज करना बहुत मुश्किल है। एक बड़ा सा ट्री देख रहे हो, आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट जो मिमी बॉन्साई है, बहुत छोटा सा बॉन्साई है, उसको मेंटेन करना उस बड़े ट्री से ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जिसमें मेहनत ज्यादा हुई हुई है उसको सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि बॉन्साई बड़ा मेंटेन करना इजी है और छोटे बॉन्साई को मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो ये डिफरेंट शेप्स हैं बॉन्साई की। अगर हम बात करें कि कौन कौन से उसमें शेप्स हैं, तो ये शेप्स हैं बॉन्साई की हाइट वाइज जो हम देख रहे थे। नाउ क्लासिफिकेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि सभी बोलते हैं कि मैं बॉन्साई बनाना चाहता हूं तो कौन सी शेप बनेगी, कैसे बनेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रूम स्टाइल बॉन्साई, तो इसमें आप देखोगे अपराइट है और पूरा ब्रूम बनता है। तो इसकी शेप के बॉन्साई भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो ये अपराइट है, सेकंड 1/3 ऑफ द ट्री हाइट है जो वो हम सेलेक्ट की हुई है। तो आपकी ट्रे देखो, बॉन्साई की हाइट देखो, तो ये प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये एक बाउल टाइप में है, आप ऊपर से देखोगे बाउल टाइप शेप्ड क्राउन है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ब्रूम स्टाइल में। नेक्स्ट है फॉर्मल अपराइट। आप देख रहे हो प्लांट बिल्कुल सीधा जा रहा है, उसकी दोनों साइड्स में डिफरेंट हम क्राउन्स डिवेलप कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपराइट फॉर्मल बॉन्साई। सो इनफॉर्मल ये जिगजैग शेप में है, ठीक है, एस शेप में भी हो सकता है। ये शेप का बॉन्साई में मैं आपको दिखाऊंगा, जो अभी जस्ट हमने लास्ट ईयर शुरू किया है शेप देनी। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल अपराइट बॉन्साई। नेक्स्ट है स्लांट बॉन्साई। ये देखो आप बिल्कुल सीधा है और थोड़ा टेढ़ा होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्लांट बॉन्साई। कैस्केड, ये बहुत खूबसूरत बॉन्साई होते हैं, तो इसको हम नीचे को कर्व करके बॉन्साई बनाते हैं। सो ये ऑलमोस्ट कर्व होगा, इसमें डाउन कर्व होगा, इन बॉन्साई को बनाते हैं। तो ये सेमी कैस्केड है, उसमें आप देख रहे थे कि बॉन्साई पूरे का पूरा यू बना के डाउन आ गया, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हाफ जो सर्कल है वो बन रहा है और बॉन्साई सेमी कैस्केड है। ये बॉन्साई की शेप मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, बट लोग इसको पसंद करते हैं, बेंजिंगी। तो इसमें एक स्ट्रेट जाती है शेप और छोटा सा क्राउन हम ऊपर बनाते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हो विंड स्वेप, बहुत खूबसूरत बॉन्साई होते हैं। ये ऐसी लुक में आते हैं कि जैसे एक पौधे को हवा चल रही है और ये एक साइड झुक गए, तो इसकी शेप ऐसी होगी जैसे हवा चली और एक पौधा एक साइड को झुक गया। तो ऐसे बॉन्साइज को हम बोलते हैं विंड स्वेप बॉन्साई। सो डबल ट्रंक, ये अभी हमने शुरू किए हैं, ये भी दिखाऊंगा आपको कि डबल ट्रंक बॉन्साई कैसे होते हैं। तो बेस से अगर आप देखोगे तो दो ट्रंक आ रही हैं, उसके ऊपर बॉन्साई बन रहा है। तो मल्टी ट्रंक, बेस से ही मल्टी ट्रंक्स चलेंगे, तो इस बॉन्साई की शेप ऐसी होगी। फॉरेस्ट टाइप, ये क्या होता है कि हम काफी प्लांट्स एक ट्रे में लगाते हैं और एक फॉरेस्ट की लुक देने की कोशिश करते हैं, तो ये फॉरेस्ट टाइप बॉन्साई है, ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। नाउ ग्रोइंग ऑन रॉक बॉन्साई, तो ये भी मैंने शुरू किए थे, आप दिखाऊंगा एक दो प्लांट्स जो रॉक्स के ऊपर हम ग्रो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक नया आर्ट जो है, एक पूरा लेक्चर हो सकता है, क्योंकि आने वाला टाइम में जो देख रहा हूँ अब बॉन्साइज के ऊपर भी काम होगा, क्योंकि बॉन्साई बहुत ज्यादा डिमांड में है, सेल हो रहे हैं। एक और आने वाला ट्रेंड होगा जिसमें आप देखोगे कि प्लांट्स आपके रॉक्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में जैसे जापान है, चाइना है, इसमें तो काफी पॉपुलराइज है। इसको हम पेंजिंग बोलते हैं। तो ये पेंजिंग फॉरेन कंट्री में काफी डिमांड में है, और जैसे जैसे हम फॉरेन को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ सालों में आप इंडिया में भी पेंजिंग सेल करते हुए देखोगे। मैंने भी कुछ बनाने शुरू किए हैं, बट उसको आज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। काफी मेहनत लगती है उसको बनाने में, काफी टाइम लगता है, तो वो पेंजिंग अभी मैंने शुरू किए हैं। राफ्ट बॉन्साई, तो इसमें बेसिकली आप इसकी शेप को ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि एक प्लांट को हम बिल्कुल जमीन पे लेटा देते हैं। आपने देखा एक स्टेम है जो बेस में है, ये वाली, तो इस स्टेम के ऊपर क्या है, हमने इसको लिटा दिया तो नई शूट सीधी डेवलप हो रही है।
तो इसको हम बोलते हैं राफ्ट टाइप बॉन्साई। नाउ शेरी बॉन्साई, तो इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वुड को यूज करते हैं। जो व्हाइट कलर की आप वुड देख रहे हो, दैट इज ड्रिफ्ट वुड। तो इसके ऊपर फिर प्लांट को ग्रो करते हैं ज्यादातर। अगर आप पिक्चर्स देखोगे जापानीज बॉन्साई की, तो उसमें आपको ऐसा आर्ट जो है वो नजर आएगा। सो ये था हमारा पूरा बॉन्साई की प्रेजेंटेशन। अब 15 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से बॉन्साई प्लांट्स हम यूज करेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ये स्क्रीन को तो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। तो अभी दूसरा जो मेरा फोन है, उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो स्टार्ट करूँ। मैम मेरे को रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा फोन है उसको भी अनम्यूट कर दें। Sure, sir. By which name you will be joining from another phone, sir? ओके। थैंक यू मैम। नहीं, अभी ऑडिबल नहीं हुआ। द होस्ट इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट्स टू। ओके, एनी हाउ, तेजस बेटा लैपटॉप रख के लेके जाओ। सो साउंड है तो आंधी रहेगी, ठीक है। ओ यस, इस पे हम पिक्चर को पॉज कर देते हैं। ओके, तेजस से मिल रहा है। तेजस लैपटॉप लेके आओ। ओके ठीक है। सो आप जो अभी बॉन्साई देख रहे हो, ये फाइकस प्लांट है। तो अभी देखोगे कि जो फ्रॉस्ट है उसकी वजह से इसके जो पत्ते हैं वो पीले आ रहे हैं। बट अगर बेसिकली बॉन्साई को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसका रूट सिस्टम को सिलेक्ट करता हूँ, सो दैट अगर रूट सिस्टम आपका प्रॉपर है तो ये आपका बॉन्साई डेवलप करना बहुत इजी है। अभी मैं बोल रहा था कि हमने कुछ वाइल्ड कलेक्शन की है। तो ये आप जो प्लांट देख रहे हो, ये वाइल्ड कलेक्शन में से है। अभी इसको हम डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो जेड प्लांट आप देख रहे हो, इसको काफी टाइम हो गया हमें बनाते हुए। तो ये भी आप लास्ट प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन में फोटोग्राफ्स थी, उसमें आपने ये प्लांट देखा था। तो ये भी जेड का बॉन्साई है। ये अभी फ्रूटिंग बॉन्साई हमने शुरू किया है। ये बिल्कुल, आप अगर ये प्लांट देखोगे तो हम इसको विंड स्वेप्ट शेप में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बॉन्साई काफी पुराना है। ये बरगद का बॉन्साई ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। तो आपकी ये रूट सिस्टम जो है, ये आपको बताएगा कि ये कितना पुराना है। तो ये कुछ कलेक्शंस अभी शुरू की है। ये फाइकस का बॉन्साई है। ये जेड प्लांट है। तो जेड प्लांट के बॉन्साई बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि जिसमें मल्टी स्टेम्स बेस से होती हैं, तो ये जो प्लांट है ये मल्टी स्टेम है बेस से। तो नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हो, ये भी जेड का बॉन्साई है। फिर मैंने बात की थी कि मैं आपको बोगनविलिया का बॉन्साई दिखाऊंगा। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हो, ये बॉन्साई का जो आपका बोगनविलिया उसका बॉन्साई है। नेक्स्ट जो आप ये प्लांट देख रहे हो,
ये जेड प्लांट का बॉन्साई आप देख रहे हो। तो इसमें काफी चीजें हैं। अगर देखोगे कि अगर हमने फ्रूटिंग में प्लांट सेलेक्ट करने हैं, तो अभी हमने पहले इसको पॉट में डेवलप किए। तो पॉट में इसको डेवलप करने के बाद इसको फिर हम प्रॉपर बॉन्साई की शेप देंगे, तो ये फ्रूटिंग बॉन्साई हमारे बनेंगे। अभी इसको हमने शैलो ट्रे में नहीं लगाया, इसको सिर्फ अभी हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर डेवलप होंगे। तो ये अभी अगर आप प्लांट देख पा रहे हो, तो ये चाइनीज जो है हमारा गुआवा है। तो इसमें छोटे छोटे गुआवा आते हैं, तो हमने इसको बॉन्साई की शेप देने की कोशिश की है। तो ये भी अगर आप प्लांट देख पा रहे हो, तो ये जेड का बॉन्साई है। और हमने इसको डिफरेंट जो रॉक्स हैं उसके ऊपर डेवलप करने की कोशिश की है। ये से हम बात कर रहे थे डेसिडुअस बॉन्साई की। तो ये जो प्लांट है, ये अगर हम बात करें तो हमारा ग्रेप्स का प्लांट है। तो इस बॉन्साई के ऊपर जब ग्रेप्स लगेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये डेसिडुअस है, अभी इसमें जो है पत्ते झड़ चुके हैं, फिर उसके बाद इसमें पत्ते आएंगे। तो ये जेड का बॉन्साई है, ये जेड है। तो इनमें सबसे जो अच्छी बात मेरे को लगती है कि अगर आपने बॉन्साई रखना है, तो उसको जैसे हमने बात की नेचर इन मिनिएचर, तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉयज अगर आप रखोगे ना, तो वो अपनी ब्यूटी देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये बोगनविलिया का बॉन्साई है, ये अभी हमारा 6 साल पुराना बॉन्साई है, अभी बन रहा है। तो इसमें काफी टाइम लग रहा है, तो इसमें अगर हम छोटे छोटे स्टैचूज रखेंगे तो ये काफी ब्यूटीफुल लगेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि इनफॉर्मल अपराइट, तो हमने बताया था कि उसकी एस शेप आएगी और अपराइट होगा। तो ये अभी उसको बनाने की कोशिश चल रही है, अभी जस्ट इसको स्टार्ट किया है। इसको शेप देने के लिए अगर आप देख रहे हो, तो ये वायर्स यूज की हुई हैं। तो ये प्रॉपर वायर्स जो हैं उसको हमने यूज करके ये बॉन्साई क्रिएट की। तो ऐसे कुछ स्टैचूज हम यूज कर सकते हैं ट्रीज के लिए। तो अगर आप फ्रूटिंग में बॉन्साई चाहते हो, तो फिर इवन करोंदे का बॉन्साई बन सकता है। ये आप फ्रूट्स देख रहे हो, ये करोंदे का प्लांट्स है। तो ये काफी कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जितने प्लांट्स हैं आप देख रहे हो, ये सारे हमने छत पे डेवलप किए हैं। अब मैं बात करूं मिमी बॉन्साइज की, तो ये काफी छोटे बॉन्साई हैं जो हमने अभी बनाने शुरू किए हैं ट्रेज में। तो ये ज्यादातर मेरी बेटी जो है वो बना रही है छोटे मिमी बॉन्साई। तो बड़े बॉन्साई मेरे पास रहते हैं, तो हमने ज्यादातर इनको बांटा हुआ है। तो ज्यादातर अभी मेरा टॉपिक तो जो था वो था बॉन्साई के ऊपर, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ में कुछ टेरेस गार्डन की भी टिप्स देके जाऊं। तो हमारे टेरेस के ऊपर एक प्रॉपर गार्डन हमने एस्टेब्लिश किया था। तो उसमें डिफरेंट तरह के, पहले तो हम कैक्टस आपको दिखाते हैं। तो हमने डिफरेंट तरह के कैक्टस जस्ट टेरेस के ऊपर यूज किए हैं। और एक चीज और जो हमने न्यू किया टेरेस के ऊपर वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, तो हमने पॉट्स यूज किए थर्मोकोल के, उसमें मीडिया यूज करके फिर उसको यूज करते हैं। तो आप देखोगे कि प्रॉपर इसमें वेजिटेबल्स आपको दिखेंगी। इवन ड्रैगन फ्रूट्स जो है वो हमने लगाए हुए हैं। इस ईयर ड्रैगन फ्रूट छत के ऊपर हमारे लगे भी थे। तो इन बॉक्सेस में भी आप जो है अपने प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। अब अलग बात करें तो हर जो पोर्शन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्टेयर्स हों या फिर आपके पास कुछ शेडी एरिया हो। तो उनमें कैसे कैसे प्लांट्स लग सकते हैं, कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। सकुलेंट्स काफी अच्छे लगते हैं, कैक्टस काफी अच्छे लगते हैं। सो डिफरेंट तरह के हाइवर्थियाज आप ग्रो कर सकते हो।
कैक्टस आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास जगह कम है तो आप एक इजी सा वे मेरे वाला भी यूज कर सकते हो। आप ऐसे शेल्फ्स क्रिएट कर सकते हो तो जिसके ऊपर आप सकुलेंट्स ग्रो कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक वुडन शीट लेके उसके ऊपर ये शीट पॉलिथीन, उसके ऊपर छोटे से पॉट्स में आप जितने सकुलेंट्स चाहो उतने रख सकते हो। और इसको लगाने के लिए बहुत इजी वे किया हमने, एक वायर ली और ऊपर जस्ट नेल लगा के उसको इसके ऊपर मतलब लगा दिया। तो आप ऐसे डिफरेंट टेरेसेस क्रिएट करके भी बॉन्साई जो आपके सकुलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, वो ग्रो कर सकते हो। तो काफी प्लांट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि सबके घर में हो। तो स्पेशली आपके पास एक प्लांट होता है हार्ट श्रृंगार, जिसको निक्टेंथस बोलते हैं। तो काइंडली वो सारे घर में जरूर लगाएं क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने आप तरह के आपके फीवर्स हैं तो वो सबको ठीक कर देते हैं। तो काफी प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल के भी हैं जो हम घर में ग्रो कर सकते हैं। किसी फ्री टाइम लेक्चर होगा तो उस टाइम मैं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद फिर किसी एक कॉन्फ्रेंस में मेरा लेक्चर है। सो मैं मैम से चाहूंगा कि वो मेरे लेक्चर को एंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चनिंग है वो क्वेश्चनिंग का जवाब देके फिर मैं लीव करूंगा मैम। Yes, sir. I can see questions in the chat box. Web is asking, can you please share this PPT? And वैसे मैं वैभव को बोलना चाहूंगा कि उनको पीपीटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारा लेक्चर जो है ऑनलाइन पड़ा है। तो एक एक स्लाइड उसमें शो हो रही है। Dr. AR sir is asking, what is the average age of bonsai plant? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको मेंटेन रखते हैं। तो अगर हम मेंटेन प्रॉपर रखें तो इवन 100 साल पुराने बॉन्साई भी हैं। अगर चाइना की बात करें तो काफी पुराने बॉन्साई है उनके पास। तो ये जो प्लांट्स हैं इनको हम मेंटेन रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। मेरे पास 35 से ज्यादा हैं प्लांट्स हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, लाइफ इनकी बहुत है। Next question is, what is the minimum and maximum cost of bonsai? कॉस्ट ऑफ इसकी कॉस्ट मिनिमम भी नहीं बोल सकता और मैक्सिमम भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आप मिनिमम की बात करो आ, तो जो बॉन्साई है जस्ट अभी शेप में आना शुरू हुआ है, तो उसको आप कलेक्ट करते हो। तो आप सच में आप जो मेरा बॉन्साई देख रहे थे जिसको मैंने अपने हाथ में प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाया, आप हैरान रह जाओगे कि वो प्लांट मैंने सिर्फ 20 रुपए का खरीदा था। तो बेसिकली क्या है कि आपकी कलेक्शन है कि आप किसी नर्सरी में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये इसको मैं शेप दे सकता हूँ, तो हो सकता है 10-20 रुपए में भी पौधा मिल जाए। बट जो बॉन्साई बने हुए हैं वो 500 रुपए से शुरू हो जाता है, फिर इसकी लाखों में कॉस्ट है। चाइना से इम्पोर्ट हो रहे हैं, काफी महंगे भी मिल रहे हैं। तो इसकी पर्टिकुलर एक कोई फिक्स कॉस्ट नहीं कह सकते हम। Debrat is asking, what is the commercial use of bonsai? बॉन्साई कमर्शियल यूज की बात करो तो मैं बोलता हूँ कि कमर्शियली इस वक्त अगर किसी चीज का स्कोप है तो बॉन्साई है। मेरे पास इतने ऑर्डर रहते हैं बट मैं उस प्लांट्स को सेल नहीं कर रहा। और अगर आप नर्सरी पे जाओगे, आपके नर्सरीज में जितने बॉन्साई है सब सेल हो रहे हैं। तीसरी चीज मैं बोलूं कि अगर इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं होती तो करोड़ों रुपए के बॉन्साई चाइना से इंपोर्ट हो रहे होते। तो हम लोकल ग्रो करके लोकल कंडीशन के प्लांट्स अपने लोकल नर्सरीज में सेल कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सेकंड क्या है कि कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इवन आज जो हमारे होटल इंडस्ट्रीज हैं वो बॉन्साई को काफी रख रहे हैं। इवन इवन जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें काफी डिमांड में रहता है। इवन घरों में हम आजकल बॉन्साई रख रहे हैं। जैसे लोग अदर कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे चाइनीज हैं या जापानीज हैं, वो तो इवन अपने घर की एंट्रेंस पे अगर रखते हैं तो उसको गुड लक मानते हैं। तो आजकल हमारे लोग भी कुछ फॉरेन की चीजें अडॉप्ट करने लगे हैं, तो हमारे भी आजकल बॉन्साई को एंट्रेंस पे रखते हैं। बट
वो जगह देख के बॉन्साई रखने पड़ते हैं एंट्रेंस पे, क्योंकि ये ना हुआ कि मैंने बॉन्साई लाके सुबह रखा और शाम को मेरे को बॉन्साई एंट्रेंस पे मिला ही नहीं, कोई उठा के ले गया। तो वो थोड़ी सी कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो डिमांड काफी है और कमर्शियली वायबल है। एंड द सर लास्ट क्वेश्चन इज सर, ऑल बॉन्साई प्लांट में फ्रूट आते हैं, एग्जांपल लेमन? हाँ, मैं एक बात करूं कि हमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लांट सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं बॉन्साई में फ्लावरिंग की बात करूं तो बोगनविलिया काफी खूबसूरत है, बट उसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी। जैसे मैं बात कर रहा था कि करौंदे का प्लांट हम यूज कर रहे हैं, तो करौंदे में फ्रूटिंग आएगी, बहुत खूबसूरत लगता है बॉन्साई। जैसे मैं बात कर रहा था सिट्रस में, नारंगी है, इवन चाइनीज मौसमी है, छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं, तो वो काफी खूबसूरत लगते हैं। इवन कोशिश हमारी ये रहती है कि वो प्लांट सेलेक्ट करें जिसमें फ्रूट का साइज छोटा हो, क्योंकि अगर फ्रूट का साइज छोटा होगा, नंबर ऑफ फ्रूट्स ज्यादा आएंगे, तो वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इवन आप देखोगे कि इवन मैंगो की कुछ वैरायटीज हैं, उनके बॉन्साई आ रहे हैं, चीकू के बॉन्साई आ रहे हैं। सो फ्रूटिंग में काफी बॉन्साई आपको मिल जाएंगे, बट डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे खूबसूरत बनाना चाहते हो। मेरे ख्याल से जिनमें छोटे फ्रूट हैं वो प्लांट्स अगर आप लगाओगे तो वो बेस्ट हैं आपके बॉन्साई। So, sir, before concluding, I just want to say thank you on the behalf of everyone for joining us today and letting our participants guide to that bonsai plant, sir. एक लास्ट क्वेश्चन था कि सर, कैन लोकल वैरायटी बी यूज फॉर बॉन्साई? बिल्कुल, हम लोकल वैरायटीज को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, पीपल है, बरगद है, इवन फाइकस इन्फेक्टोरिया है जिसको हम पिलकन बोलते हैं, वो हो गए। इवन साउथ में काफी लोकल प्लांट्स हैं। अगर मैं हिमालय की ट्रॉपिकल की बात, टेम्परेट की बात करूं, तो पाइनस की कैसी काफी स्पीशीज हैं जो आपको मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, sir, and thank you to your daughter also. थैंक यू सो मच मैम। So now participants moving further, now I would like to invite our next esteemed guest, Dr. Mulli Yadav sir. So before we start, I would like to introduce him with you all. Dr. Mulli Yadav sir has done doctorate in horticulture from Allahabad and executive development program on strategic management from IIM. Kashipur, International Certified Crop Advisor accredited by American Society of Agronomy and outcome oriented with more than 22 years of experience in agriculture universities and agri-industry research. Development of new customized products with complete customized nutritional solution and biofertilizer formulation, products management, new product introduction strategy, and technical guidance. Worked as assistant professor in Allahabad Agriculture Institute of Deemed University, fully involved in teaching and research for 6.5 years. He worked for 9 years on crop nutrition and agribusiness, an organization involved in research, manufacturing, and marketing of fertilizer, pesticides, and seeds and other agri inputs in India. During these periods, he have been involved in a gamut of activities in the agri-input business, included research and agri-input sales and marketing. He also attended oral and presented papers in many national and international conferences in India and abroad. He published more than 36 research papers in different national and international peer-reviewed impact factor journals and 85 research abstracts in different national and international conferences. He is also permanent reviewer of many peer-reviewed impact factor journals, that is Scientific Horticulture, International Journal of Plant and Soil Science, International Journal of Environment and Climate Change, Journal of Food Processing and Preservation, and life member of Indian Academy of Horticulture Science. So I welcome you, sir, on the behalf of everyone. Uh, Thank you, Madhvi, for giving nice introduction about me. And I welcome to all the participants whom I will interact with today. And I will share my experience, whatever knowledge and experience I have gained during this journey, which you have already mentioned. So I will focus on different segment and in current scenario. So just I am projecting my presentation.
Is this presentation visible? Yes, sir, it is visible. Okay. So, since I will put focus on research, you can say innovation, as well as in current scenario, how we can utilize that innovation. Because I have written here for fertilizer marketing strategy in changing environment. All of you are very much aware. Right now, climate change is very erratic, you can say. Climate change, changing pace is very fast. So, in current scenario, if innovation will not align towards that, then our productivity quality will go down. And so, and our population is growing very fast, and to meet the to feed the growing population, it will be very difficult, Hilarion task. So I will touch upon all these topic in current scenario. So basically, I will touch upon on all these 4 points. Key mega trends in agriculture, policy enables value creation in agri sector, key challenges in fertilizer industry, and marketing strategy in changing environments. So I will touch upon one by one on all these points. So first, I would like to tell you what is the mega trend of Indian agri sectors. If you'll go, if you'll see one by one, rapid increasing population, as I mentioned, okay, right now our population is 1.46 billion. So by 2050, it will increase by 1.7 billion. So our population is growing very fast. So second mega trend, if you see changing dietary preferences. So our dietary preferences are changing. Population are moving more towards fruits, vegetables, and pulses. It is growing by 6 to 8% CAGR. And if you see evolution of farm holding, our farm holding is declining day by day because growing population is growing, land is not growing in that pace. So holding of farm is going down. And in that scenario, farm productivity is the major concern. Because if you are doing the cultivation in segmented land or fragmented land, the productivity will be the major challenge. Then farm labor shortage is there. It is increasing. So our labor cost, cultivation cost will go up in due course of time. Other resources, if you talk about declining water resources, our water resources is reducing or declining, you can say. And last point, if you see erratic weather patterns, it is increasing. You can't predict about the weathers. Frequent heat waves are coming, droughts are coming, cyclones are coming, and monsoon are not predictive. So all these are the macro trends in Indian agri sectors. So first we should talk about population versus food grain products. If you see the trends where we are in 50-51, where we were, and right now where we are, and in 30-31, where we will. So if you go see here, then you will come to know our area has increased from 97 million hectare to 121 million hectare. So there's not big jump in this case, because now almost area is cultivable area is almost constant, not increasing in very fast way. Because and if you go by production, it is 326 million tons of food grain products. And if you see this population, it is 1.552 million billion population is there, will be in 3031. So what will be the major challenge? Meeting food requirement of the growing population with declining available land
will pose the real challenge because land are reducing, available land are reducing per capita. So, in that situation, increasing the productivity will be the major challenge. So, need to increase the productivity. In this scenario, how you will feed the population, growing population, you have to increase the productivity. And that is expected right now. Current productivity is 2.49 tons of food grain. I'm talking about food grain. And uh, by 2030, it will be 2.56 ton per hectare. So this is very low, and if it will grow by this pace, it will be very difficult to feed the growing population. So if you see the current scenario, our food grain production increased from 197 million ton to 329 million tons. It was 2001 197 million tons, and right now it is 329 million tons. If we talk about fruits and vegetable, it was 137 million tons, and right now it is 317 million tons. So same way, if you see the area, food grain area, it is increased by 7%. But if you talk about this fruits and vegetable horticulture area increase, it is 82%. Same way, if you see the productivity, in case of food grain, from 1.6 million ton per hectare to 2.5 million ton hectares. And same way, if you talk about fruits and vegetables, 13.5 to 17.5 million tons per hectares productivity. So, in terms of food grain production, uh, right now 329 million ton is there. By 2050, it will be 400 million tons. And if you talk about fruits and vegetable, right now 317, and by 2050, it will be 650 million tons. But we have to see also parallelly what will be the requirement at that time. If you talk about food grain production, in 2047, food grain requirement will be 520 million metric ton. So we will have lack of one 120 million tons. So if we not increase the productivity, then we will have lack of 120 million tons of food grain. So we will not be able to meet the growing population in a better way. And if we talk about fruits and vegetable, we will be almost on parallel. Whatever what requirement will be 649, and we will reach to 650. So almost we will achieve in case of fruits and vegetable. But in case of food grain production, we will have shortfall of 120 million tons. So we have to come up with that type of technology by which we can improve the uh, uh, productivity. So government policy enabling us, the agri sectors, to improve the productivity. If we talk about this micro irrigation, India is having right now 78.27 lakh hectares of micro irrigation. So government is pushing on this. You know, if you move from conventional method of cultivation, means ki right now in most of the cases we are doing the cultivation, uh, soil application plus flood irrigation. But when we'll move from flood irrigation to micro irrigation, 15% productivity will go up. So, and if you move from soil application to fertigation, 30-35% you can improve the productivity over soil application. So, if this infrastructure structure will increase, micro irrigation will increase, definitely we can improve the productivity. Second thing, growing importance of cold storage. You know right now, 15 to 20% post-harvest losses are there.
So if cold storage facility will improve, then we can reduce the post-harvest losses. Right now, if you see the capacity of cold storage in 2014, our cold storage facility was 31.82 million metric ton. But if you see that in current scenario, it is 31.42 million metric ton. So cold storage facility is increasing day by day. So by using this, we can reduce the post-harvest losses. And finally, if you see the export, it is increasing year on year basis. In 2016-17, 33 billion US dollar. Right now, it is 48 billion US dollar. So same way, our you can say clustered cultivate farming is increasing. You can say example is FPO. So FPO is nothing but a group of farmers, organized group of farmers. So right now it is 9,000 FPOs are active in India. So farm tech advancement, if you see, so AI-based agriculture is in increasing. Data driven agriculture and precision farming is increasing day by day. So if this type of precision farming will increase, definitely productivity will increase. Microfinance and insurance. So from government side and so many private companies are coming in this line to support the farmers. So now, what is the key challenges in fertilizer industry? So if you see the in Indian agriculture, what are the challenges? Challenges in terms of challenges, if you see limited availability and utilization of soil testing facility. We don't have sufficient soil testing facility. And if we are not having sufficient number of soils facility, in that case, farmer will not come to know about his soil. Either their soil uh, is poor or it is healthy. So, or their soil health is deteriorating or it is maintaining. So, so we have to improve this soil health soil testing facility in India. Government has to push to increase the soil testing lab. Same way, if you see high cost of micronutrients compared to conventional fertilizers, government is majorly giving the subsidy on NPK. The government is not giving too much subsidy on micronutrients. So their prices are very high. So farmers are only focused on major nutrients. They are not focused on micronutrients. So they farmers are not doing the uh, 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 balanced nutrition, not giving the balanced nutrition to the crop. So they are not getting uh, better productivity from their land. And parallelly, what is happening if they are not putting, they will not put their that micronutrients or they will not go for balanced nutrition. Then in that case, multi-nutrient deficiency will come in the soil. So and predominant, so yeah, I already discussed it. And secondly, they are not having much awareness about the importance of secondary and micronutrients. They have knowledge on NPK, but they are not having knowledge, more awareness about the secondary and micronutrients. So if you see the nutrient deficiency in the soil, Indian soil, uh, so you talk about organic carbon, 67% soil is deficient in organic carbon, and health is decided on based on organic carbon only. So our soil health is very much poor. 67% soil health is poor. If we talk about the nutrient deficiency, then you can see here 56% soil is deficient in sulfur, 47% soil is deficient in boron, 39% soil is deficient in zinc, and 16% manganese, 6% copper. So because we are not doing the balanced nutrition. We are not giving the balanced nutrition to the crops or to the soil. So
crop is taking the nutrients whatever present in the soil, but externally we are not putting whatever quantity of nutrients, replacement nutrients taken by the plants. So depletion of different nutrients is coming in the soil. And as I discussed about the balanced nutrition, they are not doing the balanced nutrition in their agriculture. If you see our ideal ratio should be 4 is to 2 is to 1. NPK ratio, ideal NPK ratio should be, they should put in this ratio 4 is to 2 is to 1 of NPK. But if you talk about this Rajasthan, in Rajasthan, farmers are putting 95 is to 37 is to 1. Means in this ratio, this much of distortion is there in the ratio of NPK. Talk about Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. So it is totally distorted. So either plant is not good, getting the nutrient in the right ratio, or soil is not getting the nutrients in a right ratio. So distortion of NPK ratio is happening. Consequences is it is impacting the crop productivity, depleting the soil organic carbon and pH of the soil. So, and a declining crop response ratio. So, if you not put the these nutrients in a right ratio, then you will not get the better productivity, or you will not get the right response of that nutrients to the crops, and your nutrient use efficiency will go down. So right now, if you see the nutrient, as I discussed about the nutrient response ratio, initially it was 13.4 kg per hectare nutrient response ratio was there. But right now it is 2.7. So see how much nutrient response ratio has gone down. And it is due to balanced nutrition. It is due to poor soil health. So many factors are there. But majorly soil health and balanced nutrition. That is not happening. So that nutrient response ratio is going down. So fertilizer consumption, even you can see here, you can in India it is 148 kg per hectare we are putting in case of food grain. And if you talk about this productivity gap between India and at global level, is you can see here in all the field crops, in cotton 56% productivity gap is there. In India, only zero point 0.4 ton per hectare productivity is there. But if we talk about average global productivity, it is zero point 0.8 ton per hectare. So in same way in soybean, groundnut, this maize, wheat, rice. In case of rice, it is 92% productivity gap is there. In case of wheat, 99% productivity gap is there. So we are nowhere at global standard, and it is due to balanced nutrition and poor soil health. Soil health. This is the cause by which we are much behind in comparison to global productivity. If we'll talk about this, how we can increase the productivity, and we can increase the productivity, or we can increase the nutrient response ratio by increasing the nutrient use efficiency. See, you can see here, if we are putting nitrogen through soil application, their use efficiency is 40%. Soil application plus flood irrigation. Yes, same nutrient if we are putting through soil application, and we are changing only the method of irrigation, we are putting the irrigation through drip. In that case, use efficiency go up to 65%. And if we talk about if we are doing the fertigation of nutrient, that nitrogen, then its use efficiency go up to 95%. So see the impact of technology, or you can say method of application. And if your nutrient use efficiency will go up,
you can get the maximum out with the minimum quantity. Means by using a small quantity of fertilizer, you can get more productivity from that. So we have to change our technology. We have to change our method of application of fertilizer irrigation. Only then we can increase the productivity and we can increase the nutrient efficiency and we can sustain the soil health. So here at the bottom of right hand, you will you will would be seeing here. So next, what will be the next? Next step. Right now, what we are doing, farmers are doing, even in case of fertigation, whosoever farmers are doing the fertigation, they are putting the nutrients through separate fertilizers. So if you want to enhance the use efficiency and if you want to increase the productivity, you have to go for customization of nutrients. Only then you can improve the productivity further. So what should be the marketing strategy in this scenario? So first and foremost thing is product innovation. We have to believe on innovation. We have to do the innovation. We have to come up with the innovative product. Only then we can face the challenges of changing environment. So we have to move from, in terms of product, we have to move from commodity product to specialty product. Specialty product means value added products, not these like urea, DAP, MOP, or normal 10, 26, 26, 12, 32, 16, like that. We have to move towards value added product, which I discussed, customized fertilizer type of things, where customization of nutrients are there, where features it is boosted with the advanced feature so that it can reduce the variability which are present in the environment, in the soil. So second thing, we should have customer centric approach. What are the customer pain point is there? Accordingly, we have to do the innovation. Only then customers, you can say farmers, productivity will go up. Farmers, farm income will go up. Otherwise, and we can make their soil sustained. Soil, we can improve their soil health. We can reduce the climate, we can enhance the climatic resilience in that case. Now, third point is we have to take the advantage of digital agtech technology, because you would be knowing or you would be aware about this agtech technology. So we have to combine the agtech technology in our agriculture system. Second thing, attractive packaging should be there in terms of marketing. 360-degree promotion means we have to make aware to the farmers about the innovative technology, because they are unaware about this innovative technology. Whatever innovation is there, we have to, oh, this should be reach up to farmers, last farmers level. So, and optimization of supply chain, because supply chain also increase the cost of the product. So our supply chain should be efficient so that we can reduce the cost of supply chain. And another point is value-based pricing. Of course, whatever benefit farmers are getting, how industry will do the this innovation. If they will not get the benefit of innovation, they will not focus on innovation. Of course, government should are doing the innovation parallelly. Private industry are doing the innovation. They are coming up with the innovative products, innovative solution. But they should get the benefit of that. Suppose farmers are getting, by spending 1 rupees extra, they are getting 10 rupees. Out of that, they should share with the industry also. They should understand this. Only then, of course, if anybody is coming up
with the innovative solution, they have to invest much more money onto that. So that product, innovative product or innovative solution will be costly, but they will, uh, farmers will be benefited more by using that solution or technology. And last point is there should be two-way engagement. Farmers should adopt that innovative solution, and uh, technology providers should engage with the farmers. Whatever farmers' pain point is there, they should come up with that type of technology which can resolve the problem pain point of the solve the pain point of the farmers. So this should be the marketing strategy in changing environment, or you can say our approach, technology provider approach should be like this in changing environment. Only that there will be win-win situation for the technology provider, or you can say solution provider, as well as farmers. So I already discussed on this point. So now I will talk about myself or our company organization, what we have done in this direction. So if we talk about, initially there was only soil applied fertilizers, state fertilizers, soil application through traditional fertilizer or state fertilizer. Due to that reason, productivity was much lower. I already discussed about that productivity, which was earlier and right now. So later on, in due course of time, complex fertilizer come in place, and their efficiency was better in comparison to traditional fertilizer. So their productivity increase, and we we started putting less fertilizer in comparison to traditional fertilizer, or you can say state fertilizers. Then fortification started. Initially it was DAP, NP only, urea only, N only. Then in case of this complex fertilizer, NPK fertilizers came in. So there was no need to put separate fertilizers. So after complex fertilizers where NPK was there, then solution provided worked on, and based on the required, they fortified on NPK with secondary and micronutrients. So NPK with secondary and micronutrient came in place, or you can say customized type of fertilizers came in place. And due to that reason, crop requirement was fulfilled and productivity increased. So what Mahadan uh, uh, come up, it Mahadan come up with the solution, complete solution, crop solution, you can say. That's the brand name was is CropTech. So in that you will find this solution comes under enhanced efficiency fertilizer, uh, where 8 nutrients are there in a customized manner. Whatever requirement of crops and soil, that is there. So through this solution, there will be no multi-nutrient deficiency in the soil, and you will not find any nutrient deficiency in the crops. So if you will not find any deficiency in the crop, so their productivity and quality will be much better. And you have to put lesser quantity of fertilizers in comparison to other fertilizers. So soil health will be sustained, productivity will go up, soil health will go up, and there'll be optimized cost. Farmer has to not spend too much money in their farming. So Mahadan came on this enhanced efficiency fertilizer in case of soil application fertilizers. So farmer has not to put so many fertilizers for their crops. So it is also convenience point. In their agriculture, farming has become convenient.
because they have not to put so many fertilizers. They have not to worry about whether it has gone in a balanced manner or not, because we are providing complete nutrition solution at what quantity, at what time they have to put this solution. So if we'll talk about here at the bottom, I have put the chart, bar chart. If they are putting this same quantity of nutrient, urea, DAP, MOP, and sulfur, their productivity is only 1.9 ton per hectare. 1.9 ton per hectare. But if you go by same thing, if will be replaced through our crop tech solution, crop tech dose, their productivity will be 2.174 tons per hectare. But we have our own solution. If they will adopt our complete solution, their productivity will be 2.562 ton per hectare. So see the benefit here by using the customized solution, how much productivity they can increase. And not only their productivity is increasing, their quality is increasing, and as well as their soil health is sustained. So this type of solution technology we have come up, and of course, farmers nowadays farmers are adopting, especially in Maharashtra, Gujarat, South, up to UP. This crop tech solution we have developed for cotton, maize, sugarcane, soybean, groundnut. So different solution is there for different crops and for different geography. So it is exactly fitting to the crops. It is exactly fitting to the soil. And just I would like to highlight one more things. If you are using lesser quantity of, especially nitrogen, so greenhouse gas emission is reduced. So it means you are in improving the climatic resilience. So that is also happening. It means we are keeping the balance between productivity, quality, soil health, and climatic resilience. So now we have also developed, in addition to soil applied fertilizers, see, in case of field crops, drip system is not available. So that is challenges. So we have come up with the solution through soil application. And in other segment, especially in case of horticulture crops, where drip system is there and farmers are putting fertilizer through drip, means they are doing the fertigation. In that segment, we have come up with the solution. That brand name is Soltec. So in that case, if you find what is the benefit of Soltec solution for different crop, because we have developed Soltec solution for different crop, and it is the ready-made tailor-made solution for that crop. See here, you can see the productivity, and this is the data of IRA Pusa New Delhi, where we have done this validation. In case of soil applied fertilizer, their productivity is 44 tons. This is the case of tomato. The 44 million ton, 44 ton per hectare. But when they will go by this Soltec solution, their productivity is increasing by 62 ton per hectare. You can see here how much productivity has gone up. 18 ton per hectare productivity has gone up. I will show you the other benefit in later slides. So what is the benefit they are getting? They are getting the high, better quality, soil health, climatic resilience with the optimized cost. So so this, as I was saying, first I would like to tell you the what we have done in Solutech solution. So we have developed for this Solutech solution for grapes, tomato, pomegranate, banana, right now citrus, even melons and sugarcane.
On all these, for all these crops, we have developed the complete nutritional package with the minimum cost. So here, whatever what is the specialty in this solution? Whatever nutrient is required for the crop for the particular stage, that that is there in only one customized grade. So almost whatever nutrient, suppose key grapes are there, we have divided their crops into three critical growth stages. And you know ki different critical growth stages has different requirement. So we identified their requirement, what are the nutrients are required, in what ratio it is required, in which form it is required, that we have accordingly we have made the solution for that. So it is exactly meeting to the crop, it is exactly meeting to the stage of that crop through this solution. So, and not only that, we have done key nutrient customization we have done as per the crop and as as per the stages. We have improved the features of that solution as per the soil condition, as per the crop. Suppose alkaline soil is there. So how we can normalize their pH, how we can normalize their calcium carbonate level, how we can improve the organic carbon through our solution so that maximum nutrient use efficiency will happen. So we have developed our products in that solution in that way. So just like I'm putting the example of sulfur, you will find so many sulfur related product in the market. But in case of our products, this benzyl superfast or benzyl zinc plus superfast, it is totally different. So it sulfur is available, more sulfur quantity of sulfur is available to the crops through this product. Soil health improvement is happening in a better way in terms of pH reduction, in terms of calcium carbonate reduction. That is happening. It tries to normalize the pH calcium carbonate in a better way. As I discussed, key whatever nutrients are required for the crop, for the particular stage, we made that type of solution through fertigation. That is completely water soluble grades. So at any point of time, what we have done, we have defined the grades, we have defined the dose, we have defined the number of application, we have defined the interval between two application. So farmer has not to put any mind, just he has to go as per the instruction of our solution. There will be no ups and downs in their crops. Their quality will improve, their productivity will improve, there will be soil health will be sustained. Since through this our solution, we have reduced the quantity of nitrogen very significantly. Almost 65% nitrogen we have reduced in comparison to RDF. So greenhouse gas emission reduction is happening in a significant way. That I will show you here. See here, what I said, the impact of, see here, impact of Solutec grades on economics and nutrient use efficiency in tomato. This is the data of IHR Bangalore. You can see here income per first line is of RDF. In case of RDF, and use efficiency is 36. Nitrogen use efficiency is 36. But through our commercial solution, where I have marked it, 74% nutrient use efficiency is there. In case of potash, in place of 61, 88% nutrient use efficiency is there. So how nutrient use efficiency has increased? And due to this increase in nutrient use efficiency, we are putting very less quantity of nutrients. So that you and if you see the productivity, first one is you see RDF, recommended dose of fertilizers, which was used here in this case at
IHR Bangalore, that is 62.96 tons per hectare. But you can see through our Solitex solution, it is 85.94 ton per hectare. See the productivity gap because it is exactly fitting to the crop's requirement. So their potential is expressing in a full way. So you can see additional income, how much farmers are getting additional income over their practice, 5.75 lakh rupees per hectare. Additional income they are getting. And here you can say if they are putting 1 rupees extra, they are getting 11 rupees extra. So this way they are getting benefit through our Solutex solution in case of tomato. As I was discussing about greenhouse gas emission, that is nitrous oxide emission. So in case of RDF, 2.9 kg per hectare nitrous oxide emission is happening. But you can see last this one treatment, through Solitex solution, only 1.6 kg per hectare nitrous oxide emission is happening. It means 45% reduction over this recommended dose of fertilizers due to Solutex solution. So what I said, and you can see second table, how soil health is improving. So that I said we have to come up with this type of technology in changing environment because our soil is deteriorating, our climate health is deteriorating. So our product, so many variables are coming up. So we have to come up with this type of technology. Only that we can improve the productivity, we can improve the quality, we can make the soil sustained, we can enhance the climatic resilience. So by the, you can see here, it is the live example through Solitex solution, and this is data validated through IRA PUSA New Delhi. That is the most reputed premier institute in India. So same way, case, we have tested our solution for onion. You can see greenhouse gas emission has reduced 37% over RDF. And if you talk about productivity, in case of RTF, it is only 16 ton per hectare, but through Solitex solution, it is 23%, 23 ton per hectare. You can see here, 7 ton per hectare productivity difference is there, and we are putting very less quantity of nitrogen. 100 in case of RDF, we are putting only 57 kg nitrogen. So due to that reason, this nitrous oxide reduction is happening. If we'll talk about this sugar cane, same way we have developed in-house, then we validated it through Basantara Sugarcane Institute for 3 years. You can see here in terms of nutrient use efficiency. In case of RDF, it is only 13, 13. In our case, you can see here 64% nutrient use efficiency is there of nitrogen. In case of potash, it is 115 in comparison to 16. So it means we have used very reduced quantity of nitrogen and other nutrients. You can say we have used only 335 kg nitrogen, 133 kg phosphorus, and 168 kg potash. Wherever, if you see in case of RDF, 400, 170, 170. We talk about productivity. Productivity in case of RDF, 124 kg ton per hectare. In our case, Solutex solution, 141. And if you talk about the sugar, which we used to call chini, in case of RDF, only 17.6 ton per hectare. In our case, 20.4 ton per hectare. So overall benefit of 1,63,900 rupees per hectare if this solution ever anybody can adopt it. And there's
as I said, their soil health will be sustained because we are putting less quantity of fertilizer in the soil. There will be no nutrient deficiency which happened due to imbalanced fertilizer. Same way, we have tested our pomegranate program in National Research Center for Pomegranate Solapur for 2 years. You can see almost 94% yield improvement has happened due to our Solutech solution. And if we talk about additional income, 4,92,000 per acre additional income has happened due to this Solutech solution. And it is because of nutrient use efficiency. In case of RDF, only 23 percent nutrient use efficiency, nitrogen efficiency is there. But in our case, 201 nutrient use efficiency there. Same way you can see phosphorus, potash. How much due to this improvement in nutrient use efficiency, we are putting very less quantity of fertilizers, but we are getting much higher productivity. And our soil health is sustained during this, and climate health has climatic resilience has improved significantly. So same way we tested on grapes also. So you can see here agronomic performance has improved because we have tested in NRC grapes, and uh, post-harvest soil health status has improved, and in comparison to RDF, and climatic resilience has improved. So you can see the photograph here. You can see the photograph of this pomegranate, how much fruits are loaded due to this Solutech solution. So next step in changing environment to support the farmers in terms of improving the productivity, quality, make their soil health sustained, and uh, to improve the climatic resilience. We have connected this solution. We are working on this. We wanted to connect our solution with this tech technology so that we can give the recommendation on real time basis. Because climatic condition or variables has changed drastically at any point of time. So by we if we are able to identify that problem at right time at that moment, and based on that, if we can give the recommendation, then we can improve the productivity further. So we are working on this. So new as of fertilizer, focus on new age of fertilizer as I said, nano fertilizer, liquid fertilizer, biostimulant, control release fertilizers, organic fertilizer, so that we can sustain the environment, we can sustain the soil, we can improve the productivity, we can improve the quality, we can supply the population of nutritious food. Because if we'll not go by this balanced nutrition, in that case, all the nutrients will not come in the produced part. And if will not come, all the nutrients will not come in the produced part. So human health will deteriorate because they will not get all the nutrients through the produce. So of course, if e-commerce is coming, evolving farm preference through e-commerce, we have to come up, make available the product through e-commerce also. Of course, so many startups are coming up or has already come up. Digital engagement we have to, as I discussed, value-added services we have to give. I already branding I already discussed with you. So effective marketing studies will be segmentation. We have to segment the geography or demography, you can say. And accordingly, we have to develop this solution so that it will exactly fit to that geography. And targeting to concentrate the marketing efforts for a higher conversion. This I will not touch upon because of course, this is the marketing strategy. If anybody wanted to come towards this marketing, then this is the right approach for marketing strategy.
segmentation, targeting, differentiation, then positioning of the product, communication design, media challenge plan, campaign rollout, and campaign effectiveness. So this way, if we are making our marketing strategy, it will be effective for any organization. So effective supply chain, effective distribution and supply chain. Actually, sometimes what happen is due to not a effective distribution system, farmers are not getting products on time. So our this distribution system or supply chain system should be effective. If it will be effective, cost will of product will be uh, go down and they will get all the products on time. So this is all about from my side. So now session is open for discussion. So participants, I will open the chat box. If you have any query, you can drop down in the chat box. So participant chat box is open. You can drop down your queries and interact with sir. So they are asking for the PPT. Okay, later on I will share with you. And someone said wonderful explanation on fertilizer topic, sir. Please share the PPT. Okay. And one person is asking difficulties in marketing fertilizer to the farmers. See, as I discussed about this marketing strategy, of course, suppose any solution has come up, farmers' awareness is not that about that innovative fertilizers. So, any organization, if coming up with any innovative technology, that should reach up to the farmers. Their approach is to make available that type of innovative solution to all a segment of farmers. Only then their maximum use will happen, and by that way, win-win situation will be for both technology provider as well as users. So anybody have any query left? So Dr. Manoj Kumar sir is asking for market strategy on nano fertilizer farmers sometimes not satisfied with the product. So what steps can be taken? Yes. See, first thing about nanotechnology, not only nanotechnology, any technology that should be uh, beneficial for the farmers. What is the problem in case of nanotechnology? What we are saying, what communication happened, this will replace 500 ml of this nano fertilizer will replace 45 kg of conventional urea. So first we have to understand the problem. Through foliar application, only we can replace 2% nutrients through foliar application.
we can't replace 50% or 75% or 100% fertilizer through foliar application because foliar application has certain limitation. So technology is very good. There is no problem on that. Only communication part is there. Due to that reason, this technology is not adopted by the farmers. So that is the main problem. Otherwise, technology is good. If any farmer is replacing this 45 kg urea through this 500 ml, their yield reduction is happening. So for the concept of foliar application is it is over and above of soil application or fertigation at a certain critical growth stage. This is the foliar application is the complementary dose at certain critical growth stages so that plants 100% requirement will be fulfilled. So this foliar application is not the replacement of major requirement. Sir, I don't think any other query left. So, sir, on the behalf of everyone, I just want to say thank you for your presence and joining us and for your valuable contribution, sir. Okay, There thank is you. Yes. once Shailesh is asking what is the widespread nutrient deficiency across Indian geographies? See, different. I shown you in my slide. So first, talk about nitrogen. Nitrogen, almost 86% soil is deficient in nitrogen. If you talk about phosphorus, potash deficiency is not much in the Indian soil. If we talk about organic, this sulfur, 56% soil is deficient. Indian soil is deficient in terms of sulfur. And if you talk about zinc for boron, 46% soil is deficient in terms of boron. Same way, 37% soil is deficient in terms of zinc and 6% in case of copper. So likewise, there is deficiency in the Indian soil. But if you go by this, we can't recover the soil in within 1 year, 2 year, or 3 years. It will take time to replenish that. So our approach should be balanced nutrition, whatever nutrients are required for the crop, and whatever as per the soil condition. That if we will go by that, then this we can recover this multi-nutrient deficiency which is there in the soil. So, sir, it's the last query of the participants. So, once again, sir, thank you so much for joining and giving your presence to us, sir. Thank you, Madhuri. Thank you And so thank you much. all. Thank you all. So, participants, this is the end of the session. You may leave now.